This is the Epilogue audio experience. Tusshar Kapoor is an actor, filmmaker, writer, and India's first bachelor dad. Kapoor shares his passion for cinema and his journey to first become a dad and later document his story in his debut book. So Tushar, after becoming a qualified graduate, what made you suddenly decide to want to get into movies? So after finishing my education, I always wanted to start a career only after I finished my education, whichever career it is. और जब मैं यूएस में था तो मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ कंप्लीट की, तो 1 साल का एक्सटेंडेड वीजा मिलता है, F1 वीजा का एक समय मिलता है जो आप एलिजिबल होते हैं करने के लिए फॉर वर्क एक्सपीरियंस. सो आई डिड दैट फॉर 1 year एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट. फिर मैंने रियलाइज किया और इतनी सारी दिक्कतें आई रिगार्डिंग वर्क परमिट्स एक्सेट्रा कि corporate world is not my cup of tea and I always wanted to do something with the film world. ये पता नहीं था कि क्या करना है. तो 99 में मैं इंडिया वापस आ गया to pursue a career in the film world, but I didn't know what. So I became an assistant director. तो ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा कि मैं एक्टर बनूंगा या ये बनूंगा या वो बनूंगा. मैंने तो मतलब पहले से ही अपने आप को एडुकेट करने का सोचा था. फिर my plan was कि सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन के जरिए मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करना है, कि मेरी रुचि कहाँ है. तो धीरे धीरे जब मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़ा, फिर मैंने असिस्टेंट किया, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर देवेंद्र धवन जी के साथ काम किया कुछ महीनों के लिए. और कुछ ऐसा मुझे क्लैरिटी मिला तो नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन एक ऑफर मिल गया फिल्म में काम करने का. बिकॉज आई यूज्ड टू मीट रूमी भाई एंड आई यूज्ड टू मीट वाशु जी ऑन डेविड जी सेट्स. तो उनको लगा कि ये असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, शायद इसको एक्टिंग करनी होगी. तो एक सब्जेक्ट था उनके पास जो उन्होंने मुझे सुनाया और उस वक्त मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और मौका मिल गया है फिल्मों में आने का, तो क्यों ना ट्राई कर लूं. तो दैट्स व्हेन आई जंप्ड इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ फिल्म्स एंड आई मेट पीपल लाइक यू. आई थिंक आई मेट यू अराउंड दैट टाइम ओनली 2000 में. जी. So, you had people around you, like your father, like your mother, like your sister, who were all doing niche work, Mother handled the finance. Father was always an actor, also the head of the company. The sister was into creative department. You had made up your mind from the beginning that you don't want to join Balaji. Yeah, I was clear कि जो भी मैं करूंगा मैं अपने खुद का ही करूंगा. और मैंने ये भी डिसाइड किया था कि अगर मैं एक्टर बन जाता हूँ या डायरेक्टर बन जाता हूँ तो मैं अपनी होम प्रोडक्शन में स्टार्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो मुझे कहा था कि तुम इंडिया वापस आ रहे हो, अभी हम तुम्हें लॉन्च करेंगे. एंड इट वाज लाइक सीनिंग बाय डिफॉल्ट. बट आई नेवर हैड द गाइडेंस. जो कहते हैं ना कि फिल्म फैमिलीज में आपको गाइडेंस मिलती है कि आपको फिल्मी करियर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वो कहीं नहीं होता. आई डोंट थिंक वो ट्रू है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मुझे कोई गाइडेंस दी गई कि या ट्रेन किया गया बचपन से कि आप अभी स्टूडियोज में आना शुरू कर दो और इस वातावरण में आप घुल मिल जाओ, ताकि आप जब फिल्मों में काम करोगे तो आपके लिए इजी होगा बिगिनिंग में. आई वॉज नेवर एक्सपोज टू इट. आई वॉज नेवर आस्क्ड टू डू एनीथिंग विद फिल्म्स. आई वॉज नेवर गाइडेड इन एनी डायरेक्शन, व्हिच मे बी अ गुड थिंग आल्सो, बिकॉज़ देन आई कुड फाइंड माय इनर वॉइस. मेरी कहानी मैं शुरू कर सका क्योंकि एक पूरी तरह एक ब्लैंक स्लेट था मेरे लिए. आई वॉज नॉट टोल्ड टू डू एनीथिंग. और अच्छा है कि मैं अमेरिका चला गया अपने आप को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहता तो बाय डिफॉल्ट शायद मैं एक्टर बन जाता, लॉन्च हो जाता, और शायद अपने पैरों पर खड़ा होना मुझे पता ही नहीं होता अगर मैं वैसे अपनी जिंदगी बिताता. बट इट वाज बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू फाइंड माय ओन स्टोरी इन अ ब्लैंक स्लेट. इसलिए जब मुझे ऑफर आया तो मैंने वो फिल्म साइन कर ली. एंड आई सेड दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू स्टार्ट विद. वेदर इट इज माय पैशन और नॉट, आई डोंट नो, बट खुद कुछ करना है, खुद कुछ स्टार्ट करना है. इस फैमिली में रहते हुए भी अपना एक अलग रास्ता शुरू करना है. कैसे जाता है वो रास्ता वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन शुरू तो करना है अपने आप. एंड दैट इज व्हाट मुझे कुछ कहना है gave me quite appropriate a title also. जी. और फिर कुछ साल गुजर गए, कुछ अच्छी फिल्में, कुछ बुरी फिल्में, जैसे खाकी वाज अ वंडरफुल फिल्म. उसके बाद आपने would you like to elaborate on Khaki and the experience of working with so many stalwarts?
Yes, I really would love to talk about खाकी because it was like a turning point. क्योंकि उसके पहले तो मतलब कि पहली फिल्म बहुत चली, फिर एक learning curve जो होता है हर एक्टर के साथ, you go through a phase where you learn what not to do and learn how to say no to films. And I went through that phase. And that phase was very important for me to learn about myself. कि uh, I have to be careful with my choices. I have to do my best, no matter how successful or unsuccessful the film is. I have to do my best. All those things I learned in that phase of 2 years, I think 2001 to 2003. And then 2003, everything just changed because I got offered this film. I hope I must have done something right in my first few films. Some worked, some didn't work, but Raj ji को लगा कि एक character है जो मुझे suit कर सकता है, and he offered me this character of a police inspector, and thereafter my career completely changed. And since then, I've still done some good things, some wrong things, but it's only been positive because of that movie and after that movie. So it was truly a turning point, I would say. तुषार, मुझे याद है कि एक बार आपने मुझे कुछ कहा कि it was on a flight that you decided that you were going to become a father because you met somebody on the flight. I met Prakash Jha on my way back from Tirupati. In the car, on the flight I met him, but we carpooled on the way back because हम दोनों की flights cancel हो गई, तो हम तिरुपति से चेन्नई फ्लाइट लेने के लिए साथ में एक गाड़ी में आए वापस. जाना तो फ्लाइट में था जहां मिले, लेकिन वापस जब गए हम लोग तो हमने कोऑर्डिनेट करके साथ में एक carpool किया. एंड तब जाकर उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप सिंगल हो, आपको बच्चे चाहिए, अगर आपको पता नहीं है आपकी शादी कब होगी भी कि नहीं, व्हाई डोंट यू ट्राई समथिंग यूनिक. एंड उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया एक फैमिली से जिनके यहाँ एक लड़की है जिन्होंने IVF और सरेगेसी के थ्रू अपनी फैमिली एज अ सिंगल मॉम स्टार्ट की थी, इवन बिफोर मी. ये कौन सा साल होगा? 2015. एंड प्रकाश जी ने मुझे उनके बारे में भी बताया, खुद के बारे में, कि ही इज अ सिंगल पेरेंट. he had been married and he has been single for many years, and he has adopted somebody as a single parent who's now a grown up woman. So he showed me his own example also, and that's when my journey into this phase of whether or not I want to be a single parent and how to go about it, and what are the criteria, what are the steps that need to be taken medically, that new phase, that new journey began. तो इसके बाद क्या मेंटल प्रोसेस रहा, क्या सोचते रहे, किन किन से बातें की, किन किन की राय ली, और कितना समय लगाया फाइनली टू डिसाइड? इसके बारे में मैंने पूरी तरह डिटेल में एक फिल्म नहीं, एक बुक लिखी है. It's almost like a film because I wrote it myself. And you physically wrote it? Yes, every word is mine. I have no co-author in this book. Wow. Yes, it took 10 to 11 months to write it. और मुझे लगा इतनी पर्सनल, इतनी निजी जिंदगी के बारे में अगर मुझे लिखना है तो खुद लिखना पड़ेगा. No one would be able to do justice to it. तो I wrote it myself. and के बारे में मैंने खासकर इन्हीं चीजों के बारे में बात किया कि मुझे कैसे पता चला सरेगेसी और IVF के बारे में, और मेरे साथ मेरे अंदर क्या डाउट्स थे, क्या कंफ्यूजन थी, क्या डर था मुझे, फिर मैंने कैसे डिसाइड किया, फिर मेरी मतलब फादर होने के बाद कैसी जिंदगी रही है, कैसे कर रहा हूं मैं सब अकेले, और यहाँ तक कि अब तक जबकि हम लॉकडाउन में आ तो गए थे 2 साल से, लेकिन कब अनलॉक होंगे पूरी तरह वो हम सबको पता नहीं, कब अनलॉक होंगे पूरी तरह. तो इसलिए दैट्स अ जर्नी आई हैव रिटन अबाउट इन दिस बुक. और तो मैं इसे संक्षिप्त में तो नहीं कह सकूंगा कि मेरे मतलब क्या क्या हुआ जब मैंने प्रकाश जी से बात की, उसके बाद मैंने कैसे डिसाइड किया, बट 2-3 महीने लगाए मैंने सारे अपनी इंट्रोस्पेक्शन की. मैंने उस फैमिली से मुलाकात की, उनसे बात की. देन दे टुक मी टू द डॉक्टर एक्सप्लेन टू मी हाउ इट इज पॉसिबल. देन अगेन आई थॉट अबाउट इट एंड देन आई मेड माय डिसीजन बाय अराउंड August, September, and I went to the doctor to say that I want to start this process. Not telling anybody, it was just between me and my doctor. I had not even told my family. So this was another, you can say, a debut that I made entirely on my own. And ये book भी मैंने खुद लिखी है, तो ये मेरी दूसरी बेबी की तरह ही है. तो I hope आप पढ़ के इसे enjoy करें. तो मुझे एक बात बताओ कि ये पूरा प्रोसेस आपने अपने अंदर प्रोसेस किया, एंड आफ्टर दैट
once you had made up your mind that you were going ahead with it, you had to break the news to your parents. Yes, once the IVF and the surrogacy were successful, or I would say the surrogacy was going to be successful, I was going to begin to do it. I realized that now there's no turning back. 4-5 महीने हो गए हैं, अभी मुझे अपने माँ बाप को बताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को घर में लेके आना पड़ेगा एक दिन and everything, and I want to involve them in the process because otherwise they should not get too much of a shock in the end. So they should be with me through the process just to be aware and to be informed. जी. तब मैंने पहले अपनी मॉम से कहा, who was very supportive. Obviously she was surprised, but she deep down understood कि मैंने खुद डिसाइड कर लिया है, और अब 40 साल की उम्र में अगर मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकूंगा तो फिर क्या कर सकूंगा. So she respected that decision. She told my father about it. I didn't tell him. She told him herself, and he was very supportive. Though he's very conservative person, but he was very supportive. And then after a few months, I told my sister because we had to allocate a space in the house. So I have written about all this. I will definitely read the book. And I have also seen you as a very good parent at the club, coming with the baby. Yes, we met 5 years back, I think, just when my son was 6 months old. Yeah. And I was so happy to see कि आप प्रैम में उनको लेकर आते हो, क्लब में, गार्डन में बैठते हो. You were spending time with the baby. You were also spending time with yourself while the baby was strolling in the pram. Yes, so I remember that was end of 2016, I think 2016. आपका एक फंक्शन था वहां पर, आपकी कोई बुक लॉन्च हो रही थी. जी, अमिताभ बच्चन ने की थी. हाँ, अमिताभ बच्चन ने की थी, लेकिन आप आए थे उस जगह को देखने के लिए, कैसी जगह है, कहाँ है. एक दिन पहले साउंड चेक करने आए थे. Remember, it was December 2016. Yes. I'm very excited that you physically wrote the book because मैंने सोचा था कि आपने डिक्टेट किया होगा या किसी ने आपके लिए लिखा होगा, मगर जब आप कह रहे हो मुझे कि आपने खुद लिखा, तो what was your regime? What was your routine? आप कितने बजे कंप्यूटर पे बैठते थे? लैपटॉप पे लिखा आपने या फिजिकली लिखा? और कितने घंटे बैठते थे? तो क्या है, जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने एक पेपर और पेन के जरिए लिखना शुरू किया था, और अनफॉर्चुनेटली मैं अपने आप को पूरी तरह लॉक करके 3 महीने सिर्फ बुक पे काम कर नहीं सका. I couldn't devote that time because even in the lockdown, even without the shootings, I was very busy. दिन में प्रोडक्शन, मेरी फिल्म लक्ष्मी की प्रोडक्शन चल रही थी, पोस्ट प्रोडक्शन थी, उसमें बिजी रहता था, या बच्चे के साथ ऑनलाइन स्कूलिंग करना है उसमें बिजी रहता था. सुबह वर्कआउट करता था, फिर शाम को बाबा को कभी नीचे बिल्डिंग पे लेके जाना है या फिर पार्क पे लेके जाना है. By then it had started opening up, so the parks were opening up in August 2020. So when I started writing the book, तो शाम को बाबा को लेके जाना था बाहर. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरा दिन खत्म करने के बाद 1 या 2 घंटे हर दूसरे दिन रात को अपनी बुक के लिए दूंगा. I said I'm going to start slow, क्योंकि ये अगर मैं अपने आप को प्रेशर करूंगा, if I overwhelm myself, I won't enjoy this process. So let me write every other day. So I have a holiday after writing. One day I write and then I have a holiday and then I write again and then I have a holiday. Because honestly, I was very scared about writing this book. I said, will I be able to do it or not? So I pampered myself initially. तो मैं बैठता था, मैं पेपर से लिखना शुरू कर देता था, और फिर आधा 1 घंटे बाद मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि कभी-कभी 1 घंटे के बजाय 2 घंटे या 3 घंटे लिखता था. And I used to go to sleep at 1:30 used to write. जी. Then gradually I started writing every day. I said अभी मुझे अच्छा लगने लगा है, तो अगर मेरा मूड है तो क्यों ना मैं रोज लिखूं. Then I started writing every day. Then I started writing sometimes when I had time in the afternoon also I used to write, and then in the night also I used to write. So twice a day I used to write. And I realized that this is now something that I am figuring out how to do. So let me write regularly. और इस दौरान मेरे एजेंट ने मुझसे कहा कि भाई तुम पेपर पे नहीं लिख सकते. You have to make a word document. So after writing for 1 month, the first chapter, I started figuring out how do I download Word and how do I write on Word. And वो सब करना शुरू कर दिया मैंने September, October के time पे. And then I've now finished the book on Word. But earlier I started writing on a paper only. So I used to follow a process. पहले मैं पेपर में notes बनाता था. फिर मैं वापस उसे rewrite करता था Word पे, ताकि फिर then I used to make it clear and then I used to correct it and write it again. Then after writing a chapter, I used to read it again and I used to make my own edits and corrections before I used to send each chapter to Penguin. So 3 steps I used to write 1 chapter.
And then obviously after finishing the whole book, then I had to go through all the edit processes, structural edit, copy edit, then there's something called something to put the pictures, to find the location where you want to put pictures. You have to do that. Yeah. Then there's a pre-final proofread, then a final proofread. तो मैंने ये पूरी book लिखने के बाद भी 5-6 बार वापस पढ़ी है. Right, because all the track corrections are there. All those corrections are there, and then permissions लेनी पड़ती हैं. तो सबसे permissions ली मैंने. You have to mail them all the parts in the book that are written about them, whether it was a doctor, whether it's Prakash Jha, whether it is the family that helped me do this process. सबसे permissions लेनी पड़ी, so I can write a book about my writing this book. Correct. But tell me, how did this agent and this publisher come into your life? Did you seek them or did they seek you? It was mystic. In 2019, my friends tell me that तुम सब कुछ इतना hands on करते हो, खुद कर रहे हो, तुम क्यों ना एक book लिखते हो? So I was thinking about it, but I was like, no, why will I write a book? How will I write a book? And then by the time 2019 was ending, I made up my mind that I want to write a book, and I have so much stuff to talk about because it's a unique journey. तो मुझे किसी और कोई और कर ले उससे पहले मुझे कर लेना है. So I did author friends. I know you, but I was not in touch with you. So I remember speaking to Meena ji, and Meena ji has been writing some books. So I spoke to her, and I told her, Meena ji, what is this? What about this idea? She said, yeah, but why not? It's not a bad idea. Should I speak to publishers about it? I said, yeah, why not? And then I think she forgot, and I forgot, and we never spoke about it again. And mystically, in the end of 2019, I was in Dubai, and वहाँ पर मुझे सुहेल माथुर का फोन आया, जो एक agent है. And he called me, and through an author. He called me through an author. And she said that I want to meet you with an agent, and I have this idea. And I met her in Mumbai when I came back from Dubai, and I said, okay, let's start this book. And we met once, and she also wrote a synopsis for me, this lady. And after reading a very small one-pager, I realized that, it's not working out for me. I need to write this book myself. So then I requested her, and I moved on to writing it myself. So it just so happened mystically that I wanted to manifest this through a book, and then suddenly I got this offer also at the end of the year. Wow. And then I took up the offer, and then I realized that I want to write it myself, and then I decided to write it myself. And then the lockdown happened, so my contract sign हुआ नहीं 3-4 महीने के लिए. तो फिर लॉकडाउन के बाद जून जुलाई में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर लिखना शुरू किया. And then because of the lockdown, which I had never planned to write about, initially in 2019, I had no idea that there'll be coronavirus. लेकिन लॉकडाउन की वजह से मुझे इतने आइडियाज मिल गए. लास्ट 2 चैप्टर्स मेरे जो 9th chapter 10th chapter वो लाइफ इन अ लॉकडाउन के बारे में है. So it became like an added advantage to me. During the writing, did you ever feel that maybe you will not be able to ever complete this? It is too overwhelming. You are going to get bogged down. You are getting frustrated of the constant proofreading and all. No, before starting the book, I thought I was going to get jacked. I was going to get screwed completely, and how will I write this book? Blah blah blah. ये मैंने क्या कर दिया? Once I started writing it, I realized कि अभी मैं let's take this process as each day as it comes, go step by step. That's what helped me going. And thereafter, I did have phases when I felt कि this is a lot of work. And ये क्या मैंने अपने सर निपट लिया, ये क्या झंझट ले लिया, इतना काम. But I was enjoying it, and it became very therapeutic for me in those dark days of 2020 and 2021. Sometimes when you write, you just exercise your mind so well that you really, you de-stress yourself, and you just feel so productive after you finish that writing session that it makes you feel very pure and very, 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 very clean and very, very clear after that. So it became let me tell you that between the lockdown years, I wrote 3 books. Oh, wow. Because I didn't want to get bogged down with the depression. So I would work on one manuscript in the morning and one in the evening. And in the afternoon, I was doing the housework and sometimes watching something on the TV, and my neighbors were sending me food. Oh, amazing. Amazing. So you occupied yourself and you wrote 3 books. Amazing. And they've all been released?
Yeah, one got released last year, and one has gone to the publisher, and the third one I'm giving final touches to, so I'll pitch it. Oh, amazing, amazing. So it really kept. So I would say I've been very productive in this lockdown. Yeah. Years because of this. मेरी सारी रातें मतलब ये book के साथ गुजरती थी, and then I used to sometimes finish writing the book by 11:30, from 9:30 to 11:30. Then I used to watch an episode and go to sleep. So I was doing everything. It just Correct. used to. That is the way to do it. Yeah, it just made me feel so relaxed. Then I used to say, I'm feeling like like I've completed my day. Now I'll watch a nice episode and then go to sleep. Perfect. So finally, Tushar, what is your advice to two people? Those who want to become fathers and those who want to become first-time authors. My advice is कि आपको अगर एक तो फैमिली स्टार्ट करनी है एज अ सिंगल पेरेंट या आपको शादी करनी है, वो आपकी मर्जी, लेकिन तब करो जब आप रेडी हो. Don't rush into it. Don't get into societal and don't fall prey to parental or societal pressure, because आपकी अंदर की आवाज आपको ही पता होती है कब आपको क्या करना होता है. और जब आपका निश्चय सही होगा, जब आपका जो डिसीजन होगा वो सख्त होगा, that is when you write a great chapter in your life. So don't worry about the age and don't worry about delays. Do when you think you're ready to do it, ताकि आपको न लगे कि अभी ये शादी या फिर ये बच्चा मेरे लिए इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि ये मुझे चाहिए. That is very important. And that's the same with the book also. Write it when you're ready to write it. Write it when you have a lot to talk about, when you can share something that you can inspire others with, hopefully. And when you can have fun writing the book. So it doesn't have to be a Me Too syndrome that, okay, मैं भी लिखता हूँ, इसने लिखा तो मैं भी लिख देता हूँ. It should be when you feel that there is an inner voice which is trying to say something. Fabulous. I am so proud of you, Tushar, for always being yourself, for always being in the space you wanted, for always taking the decisions you did, and for never needing the drums to tell the world what you're doing and why. Thank you so much, Bhavana ji. Thank you for tuning in. If you have liked this episode, do comment. Do rate on Apple Podcasts. Subscribe on your favorite podcast app like Apple Podcasts, Google Podcasts, Hubhopper, Castbox, Spotify, JioSaavn, so that you get notified when we come next. Stay tuned for the next episode with yet another guest, and until then, take great care of yourself.